Good afternoon, Pivsters. Here we are back with another live VC. Date is 27th of Jan. Day happens to be Monday, and time stands at 1:13 p.m. So let's quickly dive into the indices first. Now, it's a very crucial zone for the broader index, which has been posted in the discussion room as well. So this is the very chart which I have posted in the discussion room as well. So here, if you see, we are like following the same pattern which we had discussed in the public, public video on our YouTube channel. So there we have stated, or we have decoded a particular pattern based on monthly CPRs, where you see if the index is trying to cross, that is this level, ML4, then basically, monthly, quarterly. Yeah. So when the index is trying to cross ML4 on monthly basis, there usually has uh, been a testification of price reverting back from its virgin CPR. Now, if you see closely, we have a virgin CPR at near around July 2024. This is the monthly CPR. If you just go down deep and check a weekly CPR basis, this is also a weekly CPR. That is a virgin weekly CPR. Now, what this particular darker shades indicate? What I did is just took a confluence of this lower band and this upper band, so that in case price is trying to revert out or reverse back from here itself, then we can assume some or the other spike in the volume first, or you might see you can say flushes. अब फ्लशेस का जो टर्म है ना वो आप पूरे इस पर्टिकुलर वीसी में याद रखेंगे because this time for the you can say for the first time since fund flux is there, although we have tested it on the various instruments, but ये आपको अभी broader index में clearly दिखेगा कि flush कैसे हो रहा है and what is exactly how we can decode a flush. So please remember this term throughout for this particular VC, right? So moving on further, अगर आप देखेंगे तो this is something which you can look out for Nifty now. And जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेगा हम आगे बात करते रहेंगे. सेकेंड थिंग, अगर यही सेम चीज को हम बैंक निफ्टी पे देखें, right, the same thing can be observed with bank nifty as well. So we'll have to chill out some things, and this is also not required. Yes. So Bank Nifty देखिए, Bank Nifty is way you can say ahead of its what we can call way ahead of its you can say predecessor or let's say Nifty. ठीक है, अगर निफ्टी का आप देख रहे होंगे ब्रॉडर इंडेक्स इज ट्राइंग टू ब्रेक ऑफ नियर टू ML4. बैंक निफ्टी has already did that. इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. ठीक है, so the support here basically rise somewhere near to this weekly version CPR, okay, which is also broken, retested, and then again down. Next level of support happens to be here. You can see if I consider from this particular thing, let's say, to this particular thing, it's almost a 10-11% fall. Okay, and if I consider it from a all-time high basis, then it is near to around 20%, which is after this, you can definitely say if price is reaching here, we have entered a bear cycle. आप बहुत ही prominently इसको बोल सकते हो, right? But here comes a good, you can say, sense of mind, because when I said I have limited time and I'm showing it on monthly basis, और मैंने वीडियो में भी कहा है कि you go and check for weekly and daily, तो इसको हम थोड़ा नीचे जाके देखते हैं in a 30-minute time frame. Okay, let's switch this off and let's check for daily, because this is exactly where the you can say
some kind of information is hidden because you do not have a virgin, you can say, monthly CPR. So how to inculcate this particular pattern in totality? That is where we want to check the daily CPR. तो इसके origin पे चलते हैं and let's try to find out if we have something or the other in terms of you can say daily CPR as well. Okay, तो एक तो मुझे ये वर्जन दिख रहा है, right? Okay, this turns out to be monthly. Yeah, so daily. Yeah. So what I can spot is one weekly CPR is here. ठीक है, जो हम ऑलरेडी मार्क कर चुके थे. अब हम थोड़ा नीचे जाके मार्क करेंगे. पहले तो हमारा एक डेली सीपीआर. ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और नीचे जाके देखते हैं if we are having some or the other daily CPR as well. See, there is no kind of, you can say, even virgin or इधर डेली भी खत्म हो गया है. बेसिकली आपको कहने का मतलब ये है. ठीक है, आप ये देख सकते हैं कहीं पे भी आपको डेली नहीं दिख रहा है. डेली वर्जन भी खत्म हो गया. दिस इज द लास्ट point of contact for Bank Nifty. Now let's go and check this on a daily time frame. See, right. So nothing is a rocket science here. You just have to analyze it with a logical sense of thinking. Everything cannot be put across in a single video. If that has to happen, that has to go beyond like 2 3 hours of a particular session. There is no way you can decode that within like 10 15 minutes. Okay. So this is what is currently the scenario here. Now, if we go and check, basically, अगर हम इसको एक और कॉन्फ्लुएंस, ये जो वर्जिन सीपीआर का लाइन है ना, सॉरी वर्जिन सीपीआर का एरिया है, लास्ट लाइन ऑफ यू कैन से लिक्विडिटी बोल लो, यू कैन से ऑर्डर ब्लॉक, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो, सपोर्ट जोन बोल लो या फिर स्वैप जोन बोल लो, एनी विच वे यू वांट टू like keep this thing in your mind. But this is where market can go, you can say, uh, into a rocket move on the upper hand. Bulls can come with a rocket move. ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे दिस इज द लास्ट चांस फॉर बैंक निफ्टी. इसके नीचे ठीक है थोड़ा एरिया और कुशन रहेगा हमारे पास टू पुश ऑफ अ लिटिल लिटिल हार्डर ऑन द डाउन साइड. बट अगर जैसे कि हमने लाइन मार्क कर दिया 47,255, थोड़ा नीचे हो गया. सो नियर टू दैट पर्टिकुलर एरिया, if you are getting down below that particular, you can say, reference line, then there is some, you can say, extra need to get worried. But this is the area where we can see a sharp bounce, very sharp bounce possible. Okay, this can also turn out to be a double bottom. Keep an eye. This is where I personally like to take my, you can say, bets. ये contra bet, I like to, like, I just love this kind of contra bets. अगर ये आपका अच्छे से मतलब प्रोड्यूस हो जाता है somewhat like this, there is no seeing back, and this is the right chance because see, आपका हार्डली कितने का रिस्क है, how much risk is left? Hardly like 700 points. Check this in here, right? Although ये एक ही बार में नहीं आएगा, that is very prominent, but at least if I take it to a neckline, a particular neckline, then also it's like how can we say, almost 2.5x of what is down with a, आप बोल सकते हैं जो हमारा नीचे की तरफ रिस्क है उसका ऑलमोस्ट 2.5x हमें ऊपर की तरफ मिल रहा है टिल द नेकलाइन ओनली. उसके बाद वी कैन ऑल्सो सी अ फर्दर एक्सटेंशन ऑन द अपर हैंड. सो वो कैसे होगा, हाउ विल दैट थिंग पर्टिकुलर टर्न आउट इन अ पर्टिकुलर, यू कैन से, ट्रेजेक्टरी, that will all depend on the CPR levels first, and secondly आपके monthly
एंड डेफिनेटली वीकली सीपीआर लेवल एज वेल. तो अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई है, तो लेट्स गो डाउन टू चेक अकॉर्डिंगली. ओके, if we have talked about Nifty 50 being near ML4, also being near a particular virgin area as per the discussion, that is weekly and daily जो भी हमने देखा as per the mark chart as well, उस पे अगर आप एक चीज देखोगे ना, तो आपको ये समझ आएगा कि बैंक निफ्टी के पास इससे नीचे जाने की कहीं जगह नहीं है. इसके बाद देर इज अ फ्री फॉल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग हैपनिंग इज वेरी 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 हाई, क्योंकि इसके नीचे मतलब इट्स अ ब्लड बाथ इन द मार्केट. अगर आप इस चीज को ब्लड बाथ बोलते हो ना, ऊपर से लेके नीचे तक अभी तक का फॉल, दिस इज नथिंग. इसके बाद जो आएगा दैट वुड बी कंप्लीट, लाइक इट वुड बी अ रिप ऑफ. बिकॉज इधर क्या होगा, एफ आई एस तो सेल करेंगे करेंगे, उनकी इंटेंसिटी हो सकता है स्लो हो जाए. जो अभी इतने इंटेंसिफाइड सेलिंग आ रही है, 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, 10,000 करोड़ की भी सेलिंग हमने देखी है एक डे, एक पर्टिकुलर डे में. वो हो सकता है 1-2 हजार करोड़ आए, बट होगा क्या इधर, पूरा का पूरा जो आपका बोलते हैं ना ब्लड बाथ आएगा, वो आएगा डीआईएस की वजह से. बिकॉज डीआईएस विल ऑल्सो टर्न सेलर, और जब डीआईएस सेलिंग करेंगे देन इट्स थिंग टू वरी अबाउट एज वेल. Although FIIs might turn net buyers on some days, but दोनों का प्रेशर नीचे की तरफ ही रहेगा. राइट, सो अंडरस्टैंड दैट एंड इंक्लूड दैट इन योर स्टडी एज वेल. तो दिस थिंग कैन नाउ एक्ट एज अ कैटालिस्ट. इसका ऊपर जाना मतलब निफ्टी 50 को एक कैटालिस्ट मूव मिल जाना टू बाउंस ऑफ फ्रॉम दैट ML4 जोन. सेकेंड, आपका फिन निफ्टी सीधा ऊपर चढ़ जाएगा, और इसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी की वजह से आपका ब्रॉडर मार्केट एंड फिन निफ्टी दोनों को एक बूस्ट मिल रहा है, सेंसेक्स को भी मिल रहा है, थ्री इंडाइसेस. एंड डेफिनेटली आपको उसकी वजह से CNX 500 में भी एक छोटा सा बूस्ट देखने मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ फिनेंशियल्स एंड बैंकिंग स्टॉक्स. करेक्ट. अब जब आपको पता है कि ब्रॉडर मार्केट ऊपर जा रहा है, व्हाट विल हैपन टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, वो ऑटोमेटिकली रिकवर करना शुरू करेंगे. Okay, so understand that particular thing and keep your eyes open for any of the damn changes. So the key to this particular budget, market ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, will depend upon bank nifty. This is what accordingly my analysis says right now as per the current situation. Everything is dependent upon bank nifty. और यही वो चार्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है. ये लेवल्स गए, ये ब्लैक लाइन गई, तो मार्केट गया. देयर इज नो वे यू कैन सेव इट. अगर दिस थिंग्स आर प्रोटेक्टेड एंड मार्केट स्टार्ट्स टू रिकवर, थोड़ा बहुत चांसेस रहेंगे कि निफ्टी थोड़ा बहुत रिकवर कर जाए, और उसके बाद निफ्टी की कोई कंपनीज हो जो ब्रॉडर मार्केट को ऊपर लेके जाए, एंड साइमल्टेनियसली यू सी द फॉलो अप इन द बैंक्स एज वेल. बट आई सी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स टेकिंग द लीड during the budget session. This is what I can see as per now. बाकी तो only like अगर कोई शॉक वॉक आ रहा है बजट में, then there is a different thing. But banking and financials can be the catalyst for the budget day. So please keep that thing in mind, and let's see how that things turn out. So this was a broader view. आ जाते हैं सीधा quickly to our intraday. अभी भी ड्राई पड़ा हुआ है कुछ. Yeah, see, everything is dry. Nothing seems to be working like कुछ भी इतना, what you can say, like nothing big can be seen here. ज़्यादा बड़ा कुछ आपको spikes या फिर flux दिख भी नहीं रहा है. Right? So it's just I guess continuation of selling. Selling continuation हो रहा है और कुछ नहीं है इसमें. Let it settle because we have a further big liquidity to grab. हो सकता है आपको कल के दिन पूरा का पूरा रिवर्ट भी मिल जाए. Will depend upon when the price opens up tomorrow. But things are okay for now. इतना कुछ बड़ा बात तो अभी दिख नहीं रहा. Let's check for Bank Nifty also.
ओके, मोस्टली आई गेस बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी।